अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल सलाम है और आप देख रहे हैं लर्न विद सलाम। दोस्तों, हम आज बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर की डिफिनीशन को देखते हैं। ट्रांजिस्टर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स। ट्रांजिस्टर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको बनाया गया है 3 लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर से, यानी ट्रांजिस्टर के 3 लेयर्स हैं और सेमीकंडक्टर से बना है। दैट कैन एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड अ कंडक्टर। ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है कंडक्टर में, यानी करंट को रोकता है। द 3 लेयर ट्रांजिस्टर इज आल्सो नोन एज द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। द 3 लेयर जो है इसकी वो हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री को देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रांजिस्टर। इन 1906 इन अमेरिकन इन्वेंटर एंड फिजिसिस्ट ली डी फॉरेस्ट मेड द वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड और ऑडियन एज ही कॉल्ड इट। जो 1906 में अमेरिकन इन्वेंटर और एक फिजिक्स थे ली डी फॉरेस्ट ने वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड और ऑडियन एज बनाया था। यूज्ड इन रेडियोज़। ये कहाँ कहाँ यूज़ होते थे? ये रेडियोज़ में यूज़ होते थे। यूज्ड इन अर्ली कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में भी यूज़ होते थे। अगर आपने सुना होगा कि पहली दूसरी जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई है। दी फर्स्ट ट्रांजिस्टर, जो दुनिया में सबसे पहला ट्रांजिस्टर बनाया गया है, इसको हम देखते हैं। इन 1947 जॉन ब्रिडन एंड वाल्टर ब्रिटेन devised the first point contact transistor। जो 1947 में जॉन ब्रिडन और वाल्टर ब्रिटन था और उसने द फर्स्ट पॉइंट कंटेक्ट, उसने एक ट्रांजिस्टर बनाया जिसका नाम था पॉइंट कंटेक्ट ट्रांजिस्टर। Regions of a transistor. A transistor has 3 regions, namely emitter heavily doped। जो इमीटर होता है वो हाईली डूप्ड रीजन होता है ट्रांजिस्टर का। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। बेस लाइटली डूप्ड, जो इसका बेस होता है वो लाइटली डूप्ड होता है। कलेक्टर, जो इसका कलेक्टर होता है ये मॉडरेटली डूप्ड होता है, यानी मॉडरेटली डूप्ड होता है। आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर साइंबल, ट्रांजिस्टर साइंबल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर साइंबल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिस्टर ऑपरेशन। जो सबसे ऊपर वाला है, जो सबसे ऊपर वाला आप देख सकते हैं इसको बेस कहते हैं, और जो लेफ्ट में आपको नज़र आता है इसको इमीटर कहते हैं, और इस साथ ही साथ इसको कलेक्टर कहते हैं। फोर्स, वोल्टेज, करंट, वाटर फ्लो, करंट एम्प्लीफिकेशन। यहाँ पर आप देख दिया ट्रांजिस्टर ऑपरेशन। ट्रांजिस्टर बायसिंग। द बायस एमिटर बी जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। जो इसकी बेस एमिटर है वो फॉरवर्ड बायस्ड है। द बेस कलेक्टर बी सी जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। जो बी सी यानी बेस कलेक्टर का जंक्शन है वो रिवर्स बायस्ड में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्स बायस्ड और फॉरवर्ड बायस। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। बीजीटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजीटी यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एमओएस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। The bipolar junction transistor BJT. A bipolar junction transistor, bipolar transistor or BJT, is a type of transistor that use both electron and hole charge carriers. In contrast, unibipolar transistor such as field effect transistor only use one kind of charge carrier for their operation. BJT use two junction between two semiconductor type N type and P type. BGTs are manufactured in two types, NPN and PNP, and are available as individual components for fabricated in integrated circuit
in IC, often in large numbers. The basic function of a BGT is to amplify current. This allows BGTs to be used as amplifiers or switching, giving them wide applicability in electronic equipment including computers, television, mobile, and such as phones, radios, amplifiers, individual, industrial control, and radio transistor. Bipolar junction transistor. The term bipolar refers to the use of both holes and electron as charge carriers in the transistor structure. There are two types of BGT, the NPN and PNP. The unijunction transistor. The unijunction transistor, or UJT for short, is another solid-state three-terminal device that can be used in gate, pulse, timing circuits, and trigger generator application to switch and control either resistors and triacs for EC power control type application. Like diodes, unijunction transistors are constructed from separate p-type and n-type semiconductor materials, forming a single, hence its name unijunction p-n junction within the main conducting n-type channel of the device. यहाँ पर आप देख सकते हैं द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर EFT. The field effect transistor EFT is a transistor that uses an electronic field to control the shape and hence the electrical conductivity of a channel of one type of charge carrier in a semiconductor material. EFT are also known as unipolar transistor as they involve single carrier type operation. The EFT has several forms but all have high impedance, while the conductivity of a non-EFT transistor is regulated by the input current, the emitter to base current, and so has a low input independence. EFT conductivity is regulated by a voltage applied to a terminal. The gate, which is insulated from the device, the applied gate voltage imposes an electric field into the device, which in turn attracts or repels charge carriers to or from the region between a source terminal and a drain terminal. The density of charge carriers in turn influences the conductivity between the source and the drain. EFT field transistor आप यहाँ पर देख सकते हैं. Metal oxide semiconductor. The metal oxide semiconductor field effect transistor is a type of transistor used for amplifying or switching electronic signals. Short for metal oxide semiconductor. MOS is a method of creating transistor. MOS consists of three layers: a metal conductor, insulating silicon layer, and a semiconductor silicon layer. यहाँ पर आप देख सकते हैं bulk transistor application. Transistor is a switch. When used in electronic switch, the transistor is normally operated alternatively in cutoff and saturation regions. Transistor is amplifier. Due to small change in base current, the collector current will mimic the input with greater amplitude. Transistor is a switch. Transistors are commonly used in a digital circuit as electronic switches which can be either on or off. जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो कॉमनली हम स्विचिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी बटन को ऑफ और ऑफ ऑन करने के लिए भी यूज़ करते हैं, बोथ फॉर हाई पावर एप्लीकेशन सच एज स्विच मोड पावर सप्लाईज एंड फॉर लो पावर सप्लाई. ये हाई सप्लाईज के लिए भी हम यूज़ करते हैं और लो सप्लाईज के लिए भी. एप्लीकेशन सच एज लॉजिक गेट्स में भी इस्तेमाल होते हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में भी इस्तेमाल होते हैं. फॉर दिस एप्लीकेशन include the current switch, the voltage handled, and the switching speed characterized by the rise and fall times. Future of transistor. Molecular electronics, carbon nanotube transistor, nano inspiration wire transistor, quantum computing. CMOS device will aid functionally to CMOS non-volatile memory, optoelectronic sensing. CMOS technology will address new markets, microelectronics,
Biomedical devices. Biology may provide for new technologies, bottom up assembly, human intelligence. What's new transistor technology? Transistor made using 3-gate transistor on its 22 nm logic technology. Advantage of 3-gate transistor: more than 50% power reduction at a constant performance. 3.7% performance increase at low voltage, improved performance and effectively. तो शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और साथ साथ ही इस वीडियो को हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह बाकी वीडियो भी ज़रूर आएंगे, इसको भी देखिए हमारे चैनल पर। तो हमारा चैनल लर्न विद सलाम को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया।